A very good morning to one and all present here. I, Professor Shubhangi Chaure, Faculty of Information Technology Department of Nagpur Institute of Technology, Nagpur. I heartily welcome you all for the inaugural ceremony of 1 week training on Salesforce technology. Owing to a high demand for skilled Salesforce professionals, getting training in Salesforce will offer you fairly high pay jobs. Today, a Salesforce technical architect in US can earn up to $150,000 per year. The more trained you are, the high you will pay. It is as simple as that. It is an honor to have with us eminent and dynamic guest, Mr. Sachin Lakde, Senior Salesforce Developer Persistent, Nagpur. I welcome you, sir. I would like to welcome Dr. Amol Deshmukh, Principal NIT Nagpur, on the inaugural ceremony. Welcome you, sir. I would like to welcome Professor Jagdish Pimple, HOD of IT Department and convener of this training program on this occasion. Finally, I welcome all the participants connected with us from various institutes. Now, I would like to request Professor Jagdish Pimple, Head IT and convener of this training program, to give an opening remark. Thank you so much, Shubhangi Madam. A very warm good morning to one and all present here. I, Professor Jagdish Pimple, Head of IT Department of NIT Nagpur and convener of 1 week virtual training on Salesforce Technology-Admin. I heartily welcome you all for this auspicious occasion of inaugural ceremony of 1 week virtual training on Salesforce Technology-Admin. First of all, I would like to thank our today's chief guest, Mr. Sachin Lakde, sir, Senior Salesforce Developer, Module Lead, Persistent System, Nagpur, for accepting our invitation and being with us today in spite of his busy schedule. I would also like to thank Mr. Er.Rushikesh Dahaney, Senior Salesforce Developer Capgemini Pune, for accepting our invitation as a trainer for delivering a session in this 1 week training program in spite of his busy schedule. I'm very much happy to share with you all more than 1,000 plus participants were registered throughout the nation, where the participants are from Karnataka, Gujarat, Bihar, Delhi, Tamil Nadu, Jammu, Kashmir, Andhra Pradesh, UP, Mumbai, Pune, Nagpur, and many more. As we all know, the Salesforce technology is one of the booming technology in the world. There are huge job opportunities are available in the worldwide for the professional as well as graduates. So to aware about this technology, we are organizing this workshop. During this 1 week workshop, Mr. Er.Rushikesh Dahaney sir is going to deliver a session. I request all the participants stay active and tuned during the session. Clear your doubts from our experts. He is always ready to help you. Salesforce is not a technology to cover each and everything within a 1 week of time span. You need to practice hard and grab the knowledge as much as possible. Definitely, I will assure all the participants at the end of this training program, you feel you have learned a lot many new things about the Salesforce technology. Finally, I would like to thank our beloved principal, Dr. Amol Deshmukh sir, for his support and continuous motivation for organizing this type of event. My deepest thanks to Program Coordinator, Professor Manoj Lade sir, and all faculties of IT department for their entire efforts. One instruction for all the participants, listen very carefully. At the end of the training, we will conduct the MCQ based test on the basis of topic taught in the training. Those who have secured more than 60% marks, they will get the training completion certificate. And those participants get below 60% marks, they will get the participation certificate. Top 5 participants will be awarded with the special certificates. So with this, all the best and thank you one and all. Thank you. Over to you, Shubhangi Madam, please. Thank you so much, sir.
Now, I would like to request Dr. Amol Deshmukh sir, Principal NIT, to give an introductory remark on this training program. Sir, over to you. Thanks a lot. Am I audible? Yes, sir. Yeah. So at the outset, on behalf of Nagpur Institute of Technology, let me welcome today's esteemed chief guest and the trainers, Mr. Sachin Lakde from Persistent and Mr. Er.Rushikesh Dahaney from Capgemini. And as we are progressing through year and year, the technology is evolving like anything, and it is revolving as well as evolving. So a few years back, if we look back, probably there were very few technologies, and day by day, newer technologies have been explored. So in order to be ahead of the times, we need to upgrade ourselves. Okay. And I like to congratulate Professor Jagdish Pimple and Team IT for taking lead and organizing such a wonderful training program. And as we know, we are going through these particular testing times where Corona and pandemic is there. But if you look at for the IT sector, prospectives, and the opportunities. So I hope most of these workforce is working from the IT workforce is working from home. Nonetheless, a lot of the challenges are there, but the whole technical community is trying to overcome this, and the efforts are likewise that work should not be hampered. So I understand most of you also must be experiencing the same, but I'll appeal to all the participants to take utmost benefits out of this particular program. So thanks a lot, Sachin sir, Rushikesh sir, for being here with us. We feel honored. Thanks a lot, Jagdish sir and Team IT for organizing such a wonderful program. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Now it is my honor to introduce our today's chief guest, Mr. Sachin Lakde sir, Senior Salesforce Developer, Persistent, Nagpur. Sir is having 5 years of total experience to technical component Salesforce developer with an experience of 3 years in managing each and every responsibility of gathering project information from clients, documentation, designing, developing, and testing. Sir is having lightning component experience, built different components as a client requirement. Sir is having experience of teaching Java, database, object-oriented, etc. Sir is a platform developer, Salesforce certified, work on various Salesforce.com standard objects like accounts, contract leads, campaigns, opportunities, course, activities, dashboards, and reports. Sir worked as a Salesforce analytics like report, dashboard, and visualizing into a UI. Sir is having hands-on experience in configuring and customizing the applications on Salesforce platform. He is having hands-on experience working with a data leader, data loader, .io and import wizard, product development experience using Apex. He is involved in developing query language SOQL and Salesforce search language SOSL. Sir implemented agile methodology in project management as a part of project designing. Is involved in developing and good knowledge of territory management and multi-currency converter. He is performing database operations using Apex data loader to maintain the data quality and migration. He has designed customer formula field dependencies, validation tools, workflows, and approval process for automated alerts and field updates and email generation according to the application requirements. He's implemented security and sharing tools at object, fields, and records level of different users at a different level of organization. And also created various profiles and configured the premises based on organizational hierarchy. So worked on integration REST API and SOAP API. Sir has written mock test for integration API. Sir, your biodata is very much enlightening to all of us. Now I request Sachin Lakde sir to address the gathering. Sachin sir, over to you.
Yeah, thank you, Shubhangi, and thanks to invite me. Amol Sachin Deshmukh sir, sir. sorry to interrupt you. Can you please on your cam? Yeah, Yes. Yes, sir. now I'm audible and visible, right? So I first, Yes, thank yes, you to yes, yes, yes. Amol Deshmukh sir and the Pimple sir to invite me to as a chief guest for the today's program, and I'm also glad ki you are arranging this 1 week training program to your student and faculties and the other members as well, because today is a need of this technology, because we are facing some resource issues, because in a companies thousands of requirement is there, but only 300 500 and 700 resources available, right? So I hope so ki in next 1 year or the next 5 year, so the skillful student and resources come in towards the industry, right? So I share my screen first. So please make me as a host so that I will share my screen. Yes, yes, you can, sir. Please. Thanks for make me as a host. Yeah, my PPT show visible to all, or Yes, 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 visible. fine. Thank you. So first thing is that key, why you should transition your skill into a Salesforce. This is the very important line and headlines to all of you. So today is a very demanding technology. The reason behind that, key, this is the cloud-based technology. You can work anywhere in any locations as a centralized. Here is no bindings. Key, you can go to the office and you should work. You should start the work on, right? But why this technology is a number one CRM in the world, and why most of the project transition into the Salesforce. So Salesforce is improving the business, improving the revenue, and the ROI is nothing but a return of investment. So that is the main things to every organizations, to every company, to every industry. So that is the things. So I move towards. So you all of you know about the technology and the innovations. So in this slide, I just visible to all the technology, right? So related to the Microsoft technology, you know very well about that. Related to the Java technology, all of you know about these things. Open source technology like Linux, Java is also there. Cbin is also there. After that, BI and DWH technology. So database is a very important as a part of the platform. So if we design something, so we have a database, right? We have a database. So that time we need a database. So after that, here is a Salesforce cloud. Okay, so I will explain each and everything in just a 15 minutes, and I open your eyes. I will try to open your eyes towards the cloud-based technology. So why most of the project transitions into the Salesforce? After that, the mobile technology, you know very well about that. The Android is also there, right? But why Salesforce is a very demanding in the market? So I will explain this next slide.
Yes. So most of the people just think on ki why Salesforce is going towards the number one CRM and why most of the organization adapting the Salesforce, right? So what we can do through the Salesforce? What we can do the Salesforce? Here is we work with the banking and finance and the insurance, travel and hospitality, healthcare, media and entertainment, industrial manufacturing, engineering and the constructions, retail and the consumer. So if I just explain here retail and the consumer, so most of the people are going out to buying some grocery in FBB or super bazaar, supermarket, DMart, likewise. Okay, so most of the businesses we can capture in the retail and the consumer as well, mobile as well. In the mobile industry, we can adapting this technology, government. So I just giving one example. Just you all of you might heard about the SAP, and just I taking one example on the post office. Okay, so in a post office, SAP is implemented, right? But most of the people facing their issues, right? So right now I giving one example on the income tax. Okay, so in income tax, lots of issue is there, right? Lots of issue, but they are not able to resolving this issue before times. So time and estimation is a very important as a part of the IT. So you should remember these things. After that, so public sector. So any public sector we can implement the Salesforce, right? So next slide is a very interesting. Yes. Yes. Yeah. So why choose the Salesforce, right? So most of the industry, most of the organizations adapting this technology. So first point here is I mention increase in revenue by 25%, 25%, right? And all of you know about that Bajaj Finserv, right? So Bajaj Finserv already adapting the Salesforce. So that time Bajaj Finserv adapting this technology, his business growing in the 35%, 35%. And you all of you know about that. Ki if you are going to buy the mobile, if you are going to buy the some home appliances, home product, okay, the people or representative just tell us ki in which finance you are interested. So they are approaching towards the Bajaj Finserv, right? So after that the IDFC, after that the Citibank, after that the ICICI Bank. Okay, so most of the banking industry now towards going to the Salesforce, right? So now ICICI use the Finacle, but they are also thinking to adapt the Salesforce as well, just because of the automations, right? So this is the today's era. So after that, the second point, increase in the customer satisfaction by a 35%. So most of the customer and the client happy with the automations. And you all of you know about these things. So in the mid of before 1 month or before 2 months, so I just heard and seen in newspaper ki just because of the automations, most of the jobs are left. So this is the reason. And America press person I think published this news.
right? The reason behind that, key automations in everywhere we have automations, right? So after that, increase in ROI for the marketing buy. So nowadays you just face कि someone call you and ask you can you please open the policy, right? So it was very tedious. Most of the people just why you are calling to me for these things, right? So instead of these things, so what Salesforce do? So Salesforce automatically send the emails, automatically send the messages, automatically marketing is going towards. No one entity is here to calling the in person, So that is the advantage, that is the benefits. Okay. So after that, in a 44% increase the productivity. This is the very important. Increase the productivity. So that is very important, because sometimes you heard the Kodak, right? They are not upgrade his business, right? They are not upgrade his business. So that time Kodak is a number one in a picture and in a cameras. All of you know about these things. After that, Godrej, you know. But recently, before 3 years, I had came at the Bangalore. To attend the trailhead. So that time I had seen Godrej also implemented the Salesforce. So after that, his business growing to up to the 35%. You know, after that, CA Tire, they are also adopting. So why I am just giving this example, all of you know about these things. So that is the things, and you are also open your eyes and you can go towards the Salesforce technology. So up to the 2025, 5 million jobs are available. 5 million jobs will available in the Salesforce. So already I told key company having the thousands of vacancy, right? But only 300 resources is there. Okay. So next point, 88%. Okay. So here is written why 88%. Most of the organizations or hundreds of company already adopting this technology. Okay, so nowadays I just heard about this ICICI Bank. But actually, ICICI banking product going towards the emphasis, right? So they are use the Finacle. So Finacle is the home product of the Infosys, right? But now they are also thinking to transform our business or software into towards the Salesforce, right? So this is the big change. Now I'm moving towards the next slide because I have only, as per the guidelines, I have only the 20 minutes, right? So I will try to cover all these things. Yes. So this is the very important slides to all of you. Job opportunities in the Salesforce, right? Job opportunities in the Salesforce. So Salesforce ecosystem by 2022, that substantial year from last year forecast of 1.99 million already, right? But up to the 2022,
up to the 2022 they have created the 3.3. Lekin up to the 25, up to the 2025 they will create up to the 5 million jobs. And sometimes most of the student and people ask me ki, sir, this technology moving to forward in how much year? If recessions will come, so what happened? But I told to you ki already Mark Benioff is the founder. He already said up to the 2050, no one touches or no one create the competitors as a Salesforce. Because the reason behind that, they captured all the areas. Now, before 6 months, they introduced the education cloud as well. Now he's planning towards the AI and the ML. They captured the AI and ML as well, and already captured the in electronics era. So robotics, they already capture, right? So now he going towards the AI and the ML. So how we integrate these things? So through the APIs, we can integrate the AI and ML as well. So what about the Angular? So we can use the Angular as well, right? So nothing is impossible, everything is possible in the Salesforce, right? So here is, I just mentioned, so most of the people going to the data science, right? So data science is the big things, right? So IoT is also there. So this is not only the one of the technology, but this is the CRM, number one CRM. Okay, so here provide the 3 types of services: SaaS, PaaS, and IaaS. But some technology provides only IaaS and SaaS, not the PaaS platform, right? So I just going. What's the next slide? Yes, it's a very important slides to all of you. So most of the people just awake. So how much salary, right? So here is the graph. Okay, so Salesforce administrator 8 lakhs and above, right? 8 lakhs and above. So these are the salary scale as well. Okay, so this is the very fundamental phenomena of the Salesforce. So what about the certifications? So 40 plus certifications is available. So why we need? So actually client want the certifications. They wanted the certifications basically, right? So the company said to the client ki we have a certified developer. Okay, we have a certified developer. So that is the thing. So here is, you can see the Pardot consultant as well, right? So one thing is that ki why I am told to you ki Salesforce is going to up to the minimum of 2050 up to the 2050. The thing is that in every month or in a span of 6 months, the Salesforce thinking to buy some other. Tableau already captured. Slack, you know the Slack, just like a Microsoft Team. We can use the Slack as well, right? So he already captured the Slack as well.
After that, the MuleSoft especially we use the integration purpose. Okay. So integration. So why basically we are use the integrations? If some of the applications in the Java, so I want to move these applications towards the Salesforce. Okay. So we need integrations. If the two different applications, we need to communicate to each other. Two different applications communicate to each other. So that time we use the integrations. So finally, I just explain key how many types or how many modules basically we are used in the Salesforce. Okay. So first we can start with the admin. After the development. So in the development, which type of language basically use? So here is use the Apex. So Apex is what? Apex is nothing but related to the object oriented, right? So after that, moving towards the integrations. So what we can do in the integrations? We can communicate two different applications. Right? So after that, so I want some fantastic UI. And the responsive. Main thing is the responsive, because everyone want the responsive, right? And everyone uses the Amazon, Flipkart, but most of the people uses the Amazon. The reason behind that, it is a responsive, right? So same thing is that. So that time is the Lightning. After that, Lightning web component. So after that, Einstein. Okay. So these are the basically modules we are used in the Salesforce. So after that, what types of cloud basically provided? So different clouds of provided by the Salesforce. So now currently trending as a community cloud, education cloud, healthcare cloud, and all of you know about the healthcare is a very, very important, right? As apart from the corona, so most of the company implemented the healthcare. So Salesforce thinking on towards the healthcare, so already he established the healthcare cloud as well, right? So these are basically the things. Okay, so moving towards the next slide. Yeah, so I hope everyone enjoying this inaugural function towards the Salesforce inaugurations, and I appreciate to Pimple sir and the Amol sir. Key, you are initiated to moving forward to the training as a Salesforce, right? So this is the today's demand, and I already told to you that most of the company wanted the resources, right? Also company hire the freshers as well. But if the resources already trained, so it will very benefit to the company. It will very benefit to the industry organizations, because startup company already implemented these things. They are start taking the freshers and giving the trainings, right? Because already structure is made. So we need to use as per the business. We need to use. Everyone know DBMS, Oracle, right? And here is also use the SQL. Okay, so it's a part of database and the Oracle. Okay, so Mark Benioff is the youngest founder and the president of the Oracle organizations. At the age of 35, he
worked as a president of the Oracle India and the Oracle of the all countries, president. And at the age of 28, he works as a vice president. He works as a vice president. So history is a very interesting. So I just taking 2 to 3 minutes, okay? Because I was very interested to explain the biography of the Mark Benioff, right? Because I just taking the 1 to 2 minutes. So Mark Benioff in his educations, so he's one of the trainer or mentor, we can say. So that time his mentor said to him, "Ki Mark, in future you can work on the customer satisfaction, customer service, what exactly the customer want." So he start his research in 1990. So after 9 years, he launched the Salesforce in 1999. But there was no UI. So he worked hard on this module. After that, in 2001, he was launched the Salesforce in the market. After that, in 2005, this technology coming into the India, but no one aware about that, because Pega is also there. Pega is one of the CRM. Okay. So Pega is no, but Salesforce don't know. So after moving towards in 2010, most of the Java resources moving towards the Salesforce, right? So, and now all the domain covered by Salesforce, even educations also, even community also. We can also develop the mobile applications also. No need to use the Android. We can also use the website. We can also create the website, design the website. No need to create the domain. So everything take care by the Salesforce. No third party coming towards this Salesforce. So this is the very beneficial to all of you, right? So most of the part I had covered. So I over it, and thank you to listen me very carefully and in in silent mode. And thanks to giving me the chance to Pimple sir and Deshmukh sir. So I hope this technology moving towards, and you are. I appreciate to all of you you are arranging this type of workshop and the training program. And my colleague Er.Rushikesh Dahaney, thanks to help me to in each of roadmap, right? Okay, so thank you. Thank you so much, Sachin sir. A very useful and eye-opening information you have shared with us. Hope after listening everything from your side, all the participants are very eagerly waiting for the sessions. Okay, so thank you so much, sir. Thank you so much. Yes, Shubhangi madam, over to you. Thank you so much, sir, for your valuable time. And thank you, sir, for accepting our invitation. In spite of your busy schedule, you have taken out time and interacted with the gathering. Thank you so much once again. I thank Dr. Amol Deshmukh, sir, Principal NIT, for his continuous motivation for organizing such events. Here I conclude inaugural ceremony of this training program.
Now, moving towards the day one session of this training program on Salesforce technology, I would like to welcome Er.Rushikesh Dahaney, sir. And it is my honor to introduce our today's expert trainer, Mr. Er.Rushikesh Dahaney. Sir is currently working as a senior Salesforce developer with Capgemini Pune. Sir is having 5 years of total experience to a technical component Salesforce developer with an experience of 3+ years in managing each responsibility of gathering project management, project information from clients, documentation, designing, developing, and testing. Currently work with insurance project. Sir is having experience in teaching as programming subjects like C, C++, Core, Java, and RDBMS. Sir is having lightning experience to build different Aura component. He is a platform developer 1401 Salesforce certified. He's worked on various Salesforce.com standard objects like accounts, contracts, leads, campaigns, opportunities, quotes, activities, dashboards, and reports. So worked on Salesforce analytics like report, dashboard, and visualizing into a UI. He is having hands-on experience in configuring and customizing the applications on Salesforce platform. He is having hands-on experience working with the data leader and dataloader.io and import wizards product development experience with Apex. He is involved in developing a good knowledge on Salesforce quality query language SOQL and Salesforce search language SOSL. Sir implemented agile methodology in project management as a part of project designing. He is a good familiar with GIRA as a part of project requirement and tracking. He is involved in developing a good knowledge of lightning Aura list with pagination. Is performing database operations using Apex data loader to maintain the data quality and migration. Sir is design custom formula fields dependency, validation rules, workflows, and approval process for automated alerts and updates and email generation according to the application requirements. Sir implemented security and sharing rules as object fields records level for different users as different level of organizations. Also created various profiles and configured the permissions based on the organization's hierarchy. Your biodata is very much enlightening to all of us, sir. Now, I would like to request Er.Rushikesh, sir, to start the session of day one. Sir, over to you. Yeah, thank you, Shubhangi. Welcome, Er.Rushikesh, sir. Welcome. Thank you, sir. One request to all the participants: if you are having any questions, we'll have a separate question and answer session at the end. Okay, so please put your question at the last. Okay. Meanwhile, I request you to please don't put any questions. Okay, you note down your questions and put it at the last. Yeah, so can we start? Yes, we can. Yes. So, good morning to all. My screen is visible and I am audible. Yes, you are visible. Yes, sir. Yes. Yeah, so I'm started the session. So it is a day one. Okay, and I just prepare only 3 to 4 slides. Okay, and then after I just started the hands-on training. Okay, so my friend Sachin Lakde already explained all of the introductions part of Salesforce CRM. Okay, so I also introduced the Salesforce CRM, just a normal brief, not a brief idea, but it's a very surely idea about the Salesforce CRM. Okay, so we will start the session on introduction of Salesforce CRM. So Salesforce basically it's a cloud-based application, right? And so all of the guys are known what is mean by cloud. So cloud is nothing but the internet. Okay, no need to worry about the 2 lines or 3 lines definition. So what is mean by cloud? So cloud is nothing but the internet. There are different kinds of the organizations are available in the market now. Some of the organizations are working on premises applications, and some organizations are working on demand applications. Basically, on premises application means it requires the pre-installation first. For example, if you are a student and you learn C, C++, Java, .NET, and
if you are using Microsoft Office for the presentation, Word document preparing, so you are requires the installation first. Okay, you require the install that kind of the software first, and after that you are using that software, right? But it's an on-demand application. On-demand application is nothing but the cloud applications. Okay, the main thing is that it doesn't require any kind of the installation. Okay, if you are using Salesforce CRM, so it doesn't require any kind of the installation. It needs only your browser. Okay, any kind of the browser in your system like Google Chrome, Mozilla, Netscape Navigator, Safari and all. Okay, and internet access is there. Okay, if you are having browser and internet access, so you are using on-demand applications. Okay, so my next slide is, so it's a Salesforce.com organizations. It established in the year 1990. Mark Benioff is the founder. It's a CEO of Salesforce.com organizations. Okay, and these organizations are provided purely cloud services. So what is mean by Salesforce basically, because you are learning the Salesforce CRM now. So what is mean by Salesforce? So Salesforce is the world first customer relationship management platform. Okay, we help your marketing, sales, commerce, service, and IT teams work as one from anywhere. So you can keep your customers happy everywhere. Okay, it's a world first on-demand CRM software. Basically, CRM is nothing but the customer relationship management. Okay, everyone knows the full form of CRM, but what is exactly CRM? So CRM is the technology for managing all your company relationship and interaction with the customer and potential customer. Okay, so can you proceed next slide? So there are three different classification of services in Salesforce. First one is the software as a services, platform as a service, and then infrastructure as a services. Software as a services means it's a kind of software that provided different kinds of the services related to that particular software that you are using. Okay, so software as a service is a feature that provide the facility to access the ready-made software on the rental basis. So basically Salesforce CRM is the software, okay, that provided different kinds of the services related to Salesforce. And second is the platform as a service. So Salesforce can provide the Force.com platform. Basically in Force.com platform, Salesforce provide two different programming languages. First one is the Apex programming language. Second is the Visual Force programming language. By using Apex programming language, you can implement the business logic. Okay. And by using the Visual Force programming language, you can develop the visual like UI design. It's a kind of attractive and dynamic user UI is to be designed with the help of Visual Force programming. Okay. So basically it is a main thing that Salesforce CRM is the world first largest on-demand CRM, because Salesforce having the Force.com platform, and Force.com platform includes total two programming languages there. First one is the Apex programming language and second is the Visual Force programming language. So by using Apex, we can implement the business logic. Okay, and by using the Visual Force programming language, you can build your UI. It's a dynamic and attractive UI is to be designed. Third is the infrastructure as a services. Infrastructure as a services is that it installs the application inside the infrastructure. Salesforce basically provide the cloud servers in three different regions like North America, Europe, and then Asia Pacific region. Okay, so our India is in Asia Pacific region, so we can just learn about the Salesforce in APAC region, like Asia Pacific region. Okay, so next slide is, there are other CRM applications are already available in the market now, like Sugar CRM. You know about all the CRM. You heard about the CRM like Sugar CRM, PeopleSoft CRM, Siebel CRM. Siebel CRM is used as Infosys. Okay, MS Dynamics CRM, Infor CRM, Synergy. So these are the other CRMs are applications available in the market now. Okay, but why Salesforce CRM is number one? Why these are all CRMs are not in number one position in market? Because there are different kinds of the drawback. Like first is, these all the CRM are purely on-premises applications. These all the CRM are purely on-premise application, because it's an on-premise application. It requires the installation first, and then after you have to use that application.
Okay, means first you install this kind of the CRM application into your system, into your local device, and after that you will be use that application. Okay. Second drawback is keep on upgrade the software when you got new release into market. Means most of the time after 1 year, after 2 year, every time the Salesforce like these are the kind of the CRM, new release versions are upgradation is into the market. Okay, if you are using that upgrade version, so you buy the license, and the license cost is very huge. Okay. So, and third drawback is these are strictly CRM, no platform is to be available. Okay, these are strictly CRM, no platform is available. But in case of in the point of view of Salesforce CRM having the Force.com platform, which includes Apex programming and Visual Force programming. Okay, but in these kind of CRM, Sugar, PeopleSoft, Siebel, and etc. in this CRM, there is no platform is available. Okay, so these are the drawback of that CRM. So there are different cloud vendors are also available in market. You heard about the Amazon, Salesforce.com, Oracle, IBM, Google, Alibaba, GoDaddy, Zoho is another cloud vendors. Okay, I'm not inserting in the list, but there are different kinds of the cloud vendors are available in the market. Okay, so this is all about the introduction of Salesforce CRM. It's a short introduction. Okay, now we start our practicals. So Pimple sir, can I start? Yes sir. Yes sir. Yes sir. You can. Okay. Everyone visible my screen? No, Rishikesh sir. Now it is visible? Yes, Yes, now sir. it is. Yes. Okay. So we will start the session for creating the Salesforce.com organizations. Yeah, Rishi, I just suggest you Yeah. at the end of this training, you need to create one component as well. So Okay. the people also aware about that the lighting and the LWC. Yeah. And somewhat you are going to explain the Einstein as well, Okay. right? So in just two to three lines only, and also the community. So already we have created the community sites. So you need to aware about the community as well to the people, so that they are very interesting. Yes, we can do these things in the Salesforce as well, because most of the people don't know what we can do through the Salesforce. So we can design the websites as well. So we can do everything, because the Salesforce as a use as a 360 view, right? So you can also explain the 360 view as well, so that the people are also aware and very interesting about these things, right? Okay. So thank you. Yeah, sure. Thank you, Sachin sir. Thank you. So shall I start, sir? Yes, you can. Yeah. So we can start the Salesforce CRM. So now at first, Rishikesh sir, one request. Some participants are asking about to you please explain in Hindi also. So you please use mix Hindi as well as English. Okay. okay, Yeah, sir, yeah. no issues. So as your request, so I can start the session. Okay. Yes, So, yes. हमें अगर Salesforce CRM अगर यूज करना है, आप में से अगर किसी को भी Salesforce.com CRM अगर यूज करना चाहते हो आप लोग, तो सबसे पहले आपको तो Salesforce.com organizations create करना जरूरी है. We can create the Salesforce.com organization. Okay. After that, you use that applications, you use that kind of the CRM tool. Okay. So I just started the Salesforce.com organizations can creating. Okay. You share my screen. Is it visible now? All of the candidates. Pimple sir, my screen is visible. Yes sir, visible. So आपको अगर Salesforce.com organizations create करना है, तो जिसके लिए आपको URL पे टाइप करना होगा developer.salesforce.com/signup. Okay, developer.salesforce.com/signup.
एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक UI आएगा. It's a kind of profile. Okay, you just enter your profile details like first name, last name, enter your email address. Okay, so I just enter the first name. So she is my daughter. So just enter the email address. जो भी ईमेल एड्रेस आप एंटर करोगे वैलिड रहना जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर में आपका वेरिफिकेशन लिंक जाएगा. ओके, सो ईमेल एड्रेस जो भी डालोगे वैलिड एंटर करें प्लीज. तो रोल में आपके पास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी अवेलेबल है. डेवलपर, आर्किटेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी मैनेजर एंड बिजनेस मैनेजर. सो वी आर लर्निंग द एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट, सो जस्ट चूज द रोल एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, company name. So company name is my company name is like Capgemini. Okay, so you just insert any kind of the company. Is this your dream company, like Persistent, your dream company? So you just put in the Persistent system in that company field. Okay, and just insert the country name like India. Okay, this is my country name. Postal code is your address postal code 44009. This is my postal code. Okay, you just enter your email address again. So @gmail.com, and then after you click on the sign me up button. Okay, so you just click on the sign up button. Salesforce can send a verification link onto your mail ID, into your mail address. Like it's a this is my mail ID, like krunidahane@gmail.com. I am using that mail ID. Okay, so sometime 5 minutes later or 10 minutes later, Salesforce can send the verification link into this mail ID. Okay, so after sending the verification link, okay, you just verify that account, and after that you just log in that account. Okay, so I just refresh that my Gmail inbox. So it's 2 to 3 minutes later sending the verification mail from the Salesforce. If I am not inserting the detail in very suspicious manner, so not receive any kind of the mail. Okay. Okay. So this is the process now. Okay. Whenever the link is sending from the Salesforce, so उस समय फिर मैं उसको लॉग इन करूंगा. बट इस तरीके से आपको salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस पे आपका अकाउंट क्रिएट करना है. मैं फिर से बता देता हूँ. आप लोग टाइप करोगे developer.salesforce.com/signup. ओके, जिससे आपका पेज खुलेगा, प्रोफाइल पेज. इस पे आपको आपकी सारी डिटेल्स एंटर करना है. मेक श्योर दैट यू जस्ट एंटर योर ईमेल आईडी इज वैलिड मेल आईडी. ओके, अगर आप वैलिड मेल आईडी नहीं डालोगे तो आपके मेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक नहीं आएगा सेल्सफोर्स के साइड से. सो जो भी डिटेल्स डालोगे वैलिड एंटर कीजिए. डिटेल्स एंटर करने का जैसे ही आपने साइन मी अप बटन पे क्लिक किया, सेल्सफोर्स के जरिए आपके मेल आईडी पे, आपके उस मेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा. उस वेरिफिकेशन लिंक पे एक वेरीफाई अकाउंट करके बटन रहेगा. वेरीफाई अकाउंट करके एक बटन रहेगा. उस वेरीफाई अकाउंट बटन पे आपको क्लिक करना होता है. अभी तक के मेरे मेल आईडी पे ऐसा कुछ मेल नहीं आया, जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा. सो वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका पासवर्ड सेट करना होता है. सो आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको अल्फा न्यूमेरिक रखना है, डिजिट्स रखना है, स्पेशल सिंबल जो भी रखना है, आप जैसा भी कॉम्बिनेशन रखना चाहते रख सकते हैं आपके पासवर्ड का. जैसे ही आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, सो चेंज पासवर्ड बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे, सो आप लॉगिन हो जाओगे आपके salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. आप लॉगिन हो जाओगे salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और आपको जो यूआई है कुछ इस तरीके से आपका यूआई दिखेगा. कुछ इस तरीके से जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन हो जाओगे तो आपको जो यूआई है कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो मैं मेरा एक दूसरा अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, आपको यूआई में शो करा देता हूँ कि किस साइड से आपको यूआई दिखने वाला है. सो रिमाइंड मी लेटर. सो जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन, जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करके लॉगिन करोगे, सो आपको यूआई दिखेगा लाइटनिंग एक्सपीरियंस. ओके, देयर आर 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस इन Salesforce, लाइटनिंग एंड देन क्लासिक. ओके, हमें लाइटनिंग एक्सपीरियंस का यूआई दिखेगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तब.
ओके। और आपको अगर लॉगिन करते समय कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो नोट्स आपको शेयर कर देंगे हम लोग। नोट्स में सारी चीजें डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको अगर salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे। और मैंने अभी भी बता चुका हूँ कि आप salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करोगे। आप URL पे टाइप करोगे developer.salesforce.com/signup, ये सारी डिटेल फिल करोगे, साइन मी अप बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए मेरे मेल आईडी पे, जो मेल आईडी मैंने मेरे डॉटर का एंटर किया था, उस मेल आईडी पे Salesforce के साइड से एक वेरिफिकेशन लिंक आया है। मुझे वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना होता है। वेरीफाई अकाउंट पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पासवर्ड सेट करने बोला जाएगा। सो मैं एक पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, जो भी पासवर्ड मैं चाहता हूँ मैं एंटर कर सकता हूँ। सो अगेन confirm new password. In what city you are born? So I'll be inserting Nagpur. Password doesn't match. Okay, it's my. So change password बटन पे आपने क्लिक करना। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड बटन पे क्लिक कर दोगे आप लॉगिन हो जाओगे आपके salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। क्लियर है? तो ये आपका लॉगिन यूआई और ये आपका लाइटनिंग एक्सपीरियंस जो कि आपको शो हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक के सभी को समझा होगा। ओके। उसके बाद में यहाँ पर ये हम लोग जो यूआई देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूआई। टोटल 2 अलग अलग यूआई होते हैं, एक होता है आपका लाइटनिंग, दूसरा है क्लासिक। तो अगर आपको क्लासिक पे मूव ऑन होना है तो ये जो कॉर्नर वाला व्यू प्रोफाइल वाला जो बटन है इस पे आप लोग क्लिक करोगे। जैसे आपने इस पे क्लिक करा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू Salesforce क्लासिक। स्विच टू Salesforce क्लासिक, आपने स्विच टू Salesforce क्लासिक पे क्लिक करना, जिससे आप आपका यूआई जो देखोगे अभी आपको क्लासिक यूआई दिखना चालू हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अपना यूआई भी चेंज कर सकते हो। टोटल 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है, पहला लाइटनिंग एंड दूसरा क्लासिक। अगर किसी को क्लासिक पे काम करना है तो आप लोग क्लासिक पे भी काम कर सकते हो। वही काम जो क्लासिक में करोगे वही सेम काम आप लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे भी कर सकते हो। क्लियर है? इतना चीज सभी को समझा? इतना होने के बाद में फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने अगर ये जो विंडो है ये क्लोज कर दिया, किसी कैंडिडेट ने विंडो क्लोज किया, देन आफ्टर उसको लगा कि नहीं यार अब मैंने फिर से प्रैक्टिस करना चालू करना है, सर ने जो मुझे salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके दिया, क्रिएट करना सिखाया, मैंने तो क्रिएट भी कर लिया, अब मुझे उसके अंदर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप यूआरएल पे क्या टाइप करोगे? आपने टाइप करना login.salesforce.com। आप यूआरएल पे टाइप करोगे login.salesforce.com। login.salesforce.com जैसे आप लोग ने टाइप करा आपको यहाँ अपना अगेन मेल आईडी एंटर करना है, जो मेल आईडी आपने वहां पर एंटर करे थे। सो @gmail.com एंड मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगा। सो ये मेरा पासवर्ड। ओके। एंड देन मैंने लॉगिन बटन पे जैसे ही क्लिक करा तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। सो यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की झंझट में आप लोग बिल्कुल नहीं पड़ोगे, जस्ट यू क्लिक रिमाइंड मी लेटर। ओके। रिमाइंड मी लेटर पे आपने जैसे क्लिक करा आप Salesforce के ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहोगे। ये आपका क्लासिक यूआई जो कि आपको दिख रहा है, इसके पहले आपको लाइटनिंग एक्सपीरियंस दिखाया मैंने, ये आपका है क्लासिक यूआई। अब सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस आपने जो Salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर चुके हो उसे पहले डिटेल में उसका यूआई समझिए, देन आफ्टर हम लोग हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके। यहाँ तक के सभी को समझा होगा आई होप कि Salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे क्रिएट करोगे। सारा कुछ क्लाउड पे है, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, किसी टाइप से कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये पर्टिकुलर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तभी आप इसे यूज कर सकोगे, नहीं। आप लोग ओनली just you can create the Salesforce.com organization with the help of developer.salesforce.com/signup and after that you just login.salesforce.com। okay, so सबसे पहले UI को समझते हैं। UI पे आप इस UI को Salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिशियल UI क्यों बोलोगे? क्योंकि यहाँ पर लोगो जो दिख रहा है इट्स अ Salesforce लोगो। ओके। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने persistent का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ICICI बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया, ठीक है। तो कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे तो वो वेबसाइट आप किसके जरिए पहचानते हो कि वो उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है? क्योंकि उसके ऊपर में लोगो बाकायदा लगाया रहता है और लोगो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखेगा, इट्स ICICI बैंक लोगो।
ओके, परसिस्टेंट सिस्टम का वेबसाइट जब ओपन होगा तो आपको यहाँ पर भी परसिस्टेंट का लोगो इस साइड दिखेगा। इवन कैपजेमिनी का वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे सेम थिंग आपको वहां पर भी दिखेगा। क्लियर? सो ये लोगो रिप्रेजेंट करता है आपका salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बाजू में जो छोटा सा आपको सिंबल दिखाई दे रहा जिसमें एक बोर्ड बना हुआ है, राइट, और उसमें सफिक्स में लिखा हुआ है 21। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स रिप्रेजेंट है रिलीज वर्जन। आप किस रिलीज वर्जन पे फिलहाल काम कर रहे हो या करने वाले हो, ये चीज आपको यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ तो सिर्फ 21 लिखा हुआ है, राइट। आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ 21 लिखा है, हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये 21 एग्जैक्टली क्या है? ओके, हम लोग को कैसे पता चलेगा ये 21 क्या है? तो आपने टैब बार के ऊपर में जो आपको होम टैब दिखाई दे रहा, यू जस्ट क्लिक ऑन होम टैब। ओके, आपने होम टैब के ऊपर में जैसे ही क्लिक करा, आपको यहाँ पर सेल्सफोर्स का जो रिलीज वर्जन है जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, वो रिलीज वर्जन आपको यहाँ से पता चलेगा कि फिलहाल आप समर 2021 फॉर डेवलपर रिलीज वर्जन पे काम कर रहे हो। ओके, अब ये रिलीज वर्जन की बात बीच में क्यों आई? क्योंकि salesforce.com Salesforce CRM एक ऐसा CRM है जो कि मार्केट में एक साल में टोटल 3 अलग अलग रिलीज वर्जन मार्केट में लॉन्च करता है। ओके, इसके पहले कोई भी CRM ऐसा नहीं बना, या कोई भी आपने अभी तक के C++, जावा, .NET जितनी भी टेक्नोलॉजीज पढ़ चुके होंगे, उन टेक्नोलॉजीज में हर बार जो अपडेशंस आते हैं 1 या 1.5 साल बाद आएंगे, राइट। सो वहां पर बाकायदा उनके जो अपडेशंस आते हैं, लाइब्रेरी में आप बुक ढूंढोगे, उसके बुक भी आपको मिल जाएंगे बुक स्टॉल में। लाइक जावा का आपका कंप्लीट रेफरेंस बुक मिलता है ना। देन C और C++ का भी आपको यशवंत कानेटकर का बुक मिल जाएगा बुक स्टॉल पे कोई भी। लेकिन जब आप सेल्सफोर्स का बुक मांगने जाओगे बुक स्टॉल पे, तो आपको इसका कोई बुक नहीं मिलने वाला, राइट। क्योंकि सेल्सफोर्स जो है एक साल में 3 अलग अलग रिलीज वर्जन रिलीज करता है। अभी चल रहा है इनका समर 2021, देन विंटर, देन स्प्रिंग, ऐसे 3 अलग अलग रिलीज वर्जन मार्केट में लॉन्च हो गए। ओके, सो हम लोग जो काम कर रहे हैं फिलहाल, हमारा वर्जन चल रहा है समर 2021। सेल्सफोर्स CRM का वर्जन चालू है अभी समर 2021 फॉर डेवलपर वर्जन। आपको अगर इसे डिटेल में देखना था तो आपने होम टैब पे क्लिक करके इसको आप डिटेल में देख सकते हो कि अभी फिलहाल हम लोग किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ जो आपको सर्च फीचर दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड एज ग्लोबल सर्च फीचर, जहां पर आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। इस UI के अंदर से जितनी भी चीजें आपको सर्च करना, आप यहाँ पर आप एंटर कीजिए, सर्च बटन पे क्लिक करो तो आपको वो चीजें फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रहा स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस, तो यहाँ इस बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वापस आप अपने लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे चले जाओगे, जहां से आपको लाइटनिंग एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। ओके, आप इस पे भी वही काम कर सकते हो जो क्लासिक पे करोगे, राइट। एक्सपीरियंस देखने का UI अलग अलग है, उससे ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट डिफरेंस अगर देखने जाए तो बहुत कुछ है, बट हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल तो एडमिन, तो हम लोग जब लाइटनिंग की बात करेंगे तब मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता दूंगा कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या रहेगा इस UI में और अपने क्लासिक वाले UI, राइट। तो स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक पे मैं क्लिक करूंगा, वापस अपने क्लासिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग वापस आ गए। उसके बाद में जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा, सो इट्स अ प्रोफाइल नेम। जब आपने developer.salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोफाइल फिल करना चालू किया तो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करा, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा जस्ट। उसके बाद में आपके पास जो सेटअप बटन है, ये आपके बड़े काम का बटन है। जितने भी चीजें आप इसमें माउस क्लिकिंग के जरिए परफॉर्म करोगे, ये सब कुछ सेटअप के जरिए ही होगी। यही आपको ढेर सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा जिससे आप सारे काम कर पाओगे। ओके, उसके बाद आपका हेल्प बटन है। इस हेल्प बटन के जरिए आपको सेल्सफोर्स उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें वो डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करेगा, ट्रेल हेड, ओके, उस पे आपको लेके जाएगा, जहां से आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि आप अगर कोई चीज में अगर आप स्टक हो जाते हो बीच में तो आपको वहां से भी हेल्प हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास कंटेंट टैब है। इस कंटेंट टैब में जो चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा, सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, ऐप लॉन्चर, these are called the applications in Salesforce. These are the standard applications in Salesforce. जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस मतलब जिसे Salesforce ने बना के रखा है रेडीमेड, आप उनको यूज करोगे, राइट। सो कंटेंट टैब जो होता है उसमें आपको जितनी भी एप्लीकेशंस दिखाई दे रही है ये सारी आपकी स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। ओके, हम लोग इसको डिटेल में 1 बाय 1 देखने वाले, राइट। फिलहाल तो हम लोग UI समझ रहे हैं, तो आई होप आपको हेडर पोर्शन समझ में आ गया होगा किसको क्या बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने टैब बार पे। सो ये हमारा है टैब बार जिसपे आपको अलग अलग टैब्स दिखाई दे रही है। ओके, सो हम लोग एक प्रैक्टिकल में एक टॉपिक पढ़ते हैं। आप जब नोट्स में आपको शेयर करूंगा तो नोट्स में आपको वो टॉपिक भी मिलेगा, हाउ टू कस्टमाइज द टैब ऑन द टैब बार।
आपको प्रैक्टिकल में एक टॉपिक मिलेगा, हाउ टू कस्टमाइज द टैब ऑन द टैब बार। मैं आपको शो भी कर देता हूं। हम लोग ने हाउ टू क्रिएट salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए। इसमें सारी चीजें आपको नेविगेशंस के साथ में लिख के दिया है कि आपको नेविगेशंस कैसे कैसे जाना है, क्या करना है। अगर आप कहीं पर रुक जाते हो तो आपको ये नेविगेशंस काम में आएगी। उसके बाद आप लॉगिन कैसे करोगे उसका भी यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है कि login.salesforce.com ऑर्गेनाइज आप टाइप करोगे यूआरएल पे, देन आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर करोगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1, हाउ टू कस्टमाइज द टैब ऑन द टैब बार। आपका जो टैब बार आपको जो दिखाई दे रहा है उसे आप कस्टमाइज कैसे करोगे। ओके, सो ये जो टैब बार जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस टैब बार को मैं कस्टमाइज कैसे करूंगा। कस्टमाइज करना मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको होम टैब को छोड़ के, होम इज अ बाय डिफॉल्ट, इट्स अ डिफॉल्ट टैब। ओके, इसकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। होम को छोड़ के आपको यहाँ 4 टैब दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इनके अलावा भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब आपके टैब बार पे अगर ऐड करना है तो आपके पास प्लस बटन दिया है, आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज माय टैब। कस्टमाइज माय टैब में आप लोग ने जाना। कस्टमाइज माय टैब में जैसे आप लोग जाओगे सो आपको यहाँ अवेलेबल टैब्स करके एक ब्लॉक दिखाई दे रहा। इस ब्लॉक में जितने भी टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी स्टैंडर्ड टैब्स, दीज आर दी स्टैंडर्ड टैब्स जिसे सेल्सफोर्स ने पहले से बना के दिया है आपको, आप उनको यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड चीजें मतलब जो सेल्सफोर्स ने पहले से बना के रखा है, इट्स अ रेडीमेड। ओके, और कस्टम मतलब जिसे आप लोग बनाओगे। तो फिलहाल हम लोग ने तो कोई चीज बनाया नहीं है, तो हम लोग स्टैंडर्ड चीजें ही यूज करेंगे। तो अवेलेबल टैब्स में से अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे टैब बार पे इतनी सारी जो टैब है, मुझे इनका कोई यूज नहीं है, मैं इनका यूज नहीं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगा कि इस सब्सक्रिप्शन नाम से जो टैब है इसको सर मुझे रिमूव करना है, तो इसे रिमूव आप कैसे करोगे। आपने इसको सिलेक्ट करना, रिमूव बटन पे क्लिक करना, ये आपका रिमूव हो जाएगा। आपको लगा कि आपने कंटेंट वाले टैब को भी रिमूव करना था, आपने इसे भी रिमूव कर दिया। आपको लगा लाइब्रेरीज को रिमूव करना है, चैटर को रिमूव करना है, एक साथ आप दोनों को भी चूज कर सकते हो एंड एक साथ आप दोनों को रिमूव कर दो। देन आपने सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करा तो वापस आपका टैब बार देखिए, आपके टैब बार पे होम के अलावा कोई भी टैब दिखाई नहीं दे रहा, राइट। अब आपको लगा कि नहीं सर मुझे टैब की गरज पड़ेगी। इवन आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ टैब दिखाई देते हैं हर वेबसाइट पे, राइट। विदाउट टैब आप तो कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। तो आपको यहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं यार, होम टैब के अलावा भी मेरे पास अलग अलग टैब्स रहना जरूरी है जिनको मैं यूज करूंगा। तो हम लोग अगेन प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज माय टैब में जाएंगे हम लोग। कस्टमाइज माय टैब में जाके अगर मुझे लगा कि मुझे अकाउंट्स नाम का टैब यूज करना है, आपने उसको ऐड किया। आपको लगा कि आपको कॉन्टैक्ट्स नाम से एक टैब लगेगा, तो आपने कॉन्टैक्ट्स नाम से जो टैब है उसको आप ऐड करोगे। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट। देन आपको लगा कि आपको केस भी चाहिए, केस नाम से एक स्टैंडर्ड टैब है सेल्सफोर्स का, आपने उसे भी ऐड कर दिया। आपको लगा कि एसेट्स नाम से भी टैब लगेगा, ये भी आपने ऐड कर दिया। फिर आपको लगा कंपेन्स नाम से भी मुझे टैब लग सकता है, आपने इसे भी ऐड करा। आप एक साथ 2-3 को भी एक साथ सिलेक्ट करके आप मल्टीपल टैब्स को एक साथ चूज करके ऐड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट मुझे जितने चाहिए थे मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। अब इतना होने के बाद हमारा फर्स्ट नंबर पे है अकाउंट, सेकंड पे है कॉन्टैक्ट, थर्ड पे है केस, फोर्थ पे है एसेट एंड नेक्स्ट फील्ड पे है हमारा कंपेन्स करके टैब। अगर आपको लगा सर कंपेन्स नाम से जो टैब है वो मुझे फर्स्ट नंबर पे चाहिए, अकाउंट जहां पर है वहां पर आपने कंपेन्स को चूज करना। अब बटन पे क्लिक करो, 1 बाय 1 आपका वो जो टैब है वो फर्स्ट नंबर पे जाके सेट होगा। अगर आप चाहते हो कि सर कंपेन्स को होम के पहले लेके जाए कि हम लोग, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर अब बटन पे क्लिक करके कंपेन्स को होम टैब के ऊपर अगर लेके जाते हो तो आपको वो एरर मैसेज शो करेगा, बिकॉज होम टैब इज ए डिफॉल्ट टैब, यू कैन नॉट रिमूव। ओके, दिस इज द होम टैब इज डिफॉल्ट टैब, आप इसे रिमूव बिल्कुल नहीं कर सकते हो या इसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस वजह से हम लोग ने कंपेन्स को यही तक रखा। ओके, उसके बाद आपको लगा कि सर केस नाम से जो टैब है इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं कंपेन्स के बाद में, तो आप कंपेन्स के बाद सेकंड नंबर पे उसको सेट करो। अकाउंट्स फॉर एग्जांपल आपको डाउन में सेट करना है तो आप इसे डाउन में लेके आ जाओ एंड देन आपने सेव बटन पे क्लिक करा। तो जिस हिसाब से आपने ऑर्डर सीक्वेंस जैसा ही मेंटेन करे थे उस सीक्वेंस में ही आपको आपकी टैब यहाँ दिखाई देंगी, कंपेन्स, केसेस, कॉन्टैक्ट्स, एसेट्स, अकाउंट्स। इसके बाद अगर किसी को लगा कि सर अकाउंट्स मुझे फर्स्ट नंबर पे होना था, राइट, तो मुझे सीक्वेंस चेंज करना है, कर सकता हूँ क्या। आप सेल्सफोर्स के पास कुछ भी चीजें
इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज वो परफॉर्म कर सकता है। आप कुछ भी चीजें कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अकाउंट्स को आपको फर्स्ट नंबर पे लेके जाना है आफ्टर होम, तो आप वो भी कर सकते हो। अगेन आप कस्टमाइज माय टैब में जाइए, अकाउंट्स नाम से जो आपका टैब है जो लास्ट पोजीशन पे है, इसको आप अप बटन पे क्लिक करके फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाइए आफ्टर होम टैब, एंड देन आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना। आपका टैब बार देखिए आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगा जिस सीक्वेंस में आपने उसको सेट किया है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल, हाउ टू कस्टमाइज द टैब ऑन द टैब बार। क्लियर है? यहां तक के सभी को समझा होगा आई होप। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग सेशन में। सो मैं जा रहा हूं मेरे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। मैं नोट्स आपको फिर से शेयर किया हूं, आपको अगर दिख रहे तो। हम लोग बढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। इवन जो अभी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, अगर उसमें अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नेविगेशंस यहाँ लिखे हुए हैं सारे, कि आपको टैब बार पे जाना है, देन प्लस सिंबल पे क्लिक करना है, देन कस्टमाइज माय टैब बटन पे क्लिक करना है। सारे नेविगेशंस लिखे हुए हैं बकायदा। आपको जैसा जैसा नेविगेशंस बता रहा है वैसे वैसे आप परफॉर्म करो। अदरवाइज ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डिंग आपके पास आई होप अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर द सेशन, तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है टैब नाम से। अब टैब बेसिकली होता क्या है? टैब प्रोवाइड्स द कलेक्शन ऑफ जीयूआई। आपने इतना बड़ा लाइन याद रखने से अच्छा सिंपल सा छोटा सा एक लाइन याद रखोगे, टैब प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ जीयूआई। अब जीयूआई अगर बोलते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है, जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स है या फिर जो भी कोई फैकल्टीज है, जीयूआई मतलब कोई बहुत बड़ा टॉपिक जिसे हम लोग ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़े, ऐसा नहीं। ओके, टैब प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ जीयूआई। इसका मतलब आपके पास जो सेल्सफोर्स का आपको जो यूआई दिखाई दे रहा है, salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन जो आपको दिखाई दे रहा, ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने यहाँ अकाउंट्स टैब पे क्लिक करा। जैसे आप अकाउंट्स टैब पे क्लिक करोगे आपको यूआई कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा। ओके, आप अगर कंपेन्स टैब पे क्लिक करोगे तो आपको यूआई कुछ और दिखेगा। लाइक लोगो देखो आपको चेंज होके मिल रहा है, यहाँ लोगो कुछ ऐसा दिख रहा है। जब आप केसेस टैब पे क्लिक करोगे तो हर एक टैब आपको अलग अलग यूआई दिखाता है। ओके, अगर केसेस टैब के अंदर आपने न्यू बटन पे क्लिक करे तो ये चीज आपको कुछ और यूआई दिखेगा, राइट? If you are clicking on the contacts tab and then you are click on the new button, so you get this kind of UI। तो आपको हर टैब पे क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ UI अलग अलग दिखेगा। So tab provides a collection of GUI, different types of UI। UI मतलब ये जो यूजर इंटरफेस है जिसे आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग UI आपको टैब पे क्लिकिंग के बाद में प्रोवाइड होगा सेल्सफोर्स के साइड से, राइट? समझ में आया? अगेन अब टैब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज लेते हैं। बाय यूजिंग टैब वी कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट एंड व्यू द रिकॉर्ड अवेलेबल इनसाइड द ऑब्जेक्ट। बाय यूजिंग द टैब we can perform the insertion operation, update, delete, undelete and view the records inside the object। अब जब मैं बात करूंगा insert, update, delete, undelete and view, तो आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि यार सर फिर से अपने को SQL पढ़ना है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप टैब के जरिए अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, बट टैब के बारे में सबसे पहले आपको नॉलेज लेना जरूरी है। तो आपने अगर कोई टैब अगर देखे होगे तो आपको टैब नेम, जो कि टैब नेम ये जो दिखाई दे रहा है आपको टैब बार पे, हर टैब का जो नाम है देखिए, अकाउंट्स, कंपेन्स, केसेस, कॉन्टैक्ट्स, देन एसेट्स, सभी को प्लूरल में लिखा गया है। सभी टैब के नाम आपको प्लूरल फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। सभी टैब के नेम के पीछे आपको एस लगा हुआ दिखाई दे रहा। होम टैब को छोड़ के, होम इज द डिफॉल्ट टैब, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अकाउंट्स, कंपेन्स, केसेस, कॉन्टैक्ट्स, एसेट्स, आप कोई भी स्टैंडर्ड टैब उठा के यहाँ पर लेके आ जाइए, आपको वहां प्लूरल फॉर्मेट में ही टैब के नाम दिखाई देंगे। ओके, अब यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, टैब नेम ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्मेट, टैब नेम ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्मेट वेयर द ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्मेट। तो आपको जो टैब नेम दिखाई दे रहे हैं टैब बार पे, केसेस नाम से अगर आपके पास कोई टैब है, ओके, तो अगर आपसे किसी ने इसका ऑब्जेक्ट नेम पूछा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ दैट केसेस टैब, तो आपका आंसर रहेगा केस। केस इज द सिंगुलर नेम, केस इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ दैट केसेस टैब। कॉन्टैक्ट्स नाम से जो टैब नेम है, इसका अगर आपसे कोई किसी ने अगर ऑब्जेक्ट नेम पूछा तो कॉन्टैक्ट इज द ऑब्जेक्ट। कंपेन्स, ऑब्जेक्ट नेम इज द कंपेन। अकाउंट्स, account is the object name। asset is the object name, assets is the tab name। so tab name always in plural format,
ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्मेट। क्लियर है सभी को, यहां तक के समझ में आया? सो एसेट्स इज द प्लूरल लेबल नेम, इट इज काइंड ऑफ टैब नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज एसेट। ओके, हर बार आपने याद रखना कि आप जब भी कोई टैब क्रिएट करोगे या जो भी कोई टैब सेल्सफोर्स के साइड से आपको बना के मिली है, जो स्टैंडर्ड टैब्स है, उनके सभी के नाम प्लूरल फॉर्मेट में होते हैं, और उनके अगर ऑब्जेक्ट नेम आपसे किसी ने पूछा तो ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्मेट। ओके, आपको नोट्स में अगर आप देखोगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेगी, सेम थिंग, सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं नोट्स में मेंशन कराए हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट नेम है तो आपका टैब नेम रहेगा कंपेन्स, लीड नाम से आपका ऑब्जेक्ट नेम है तो टैब नेम रहेगा लीड्स नाम से, अकाउंट नाम से ऑब्जेक्ट नेम है तो अकाउंट्स नाम से टैब नेम रहेगा। तो टैब नेम ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्मेट। सेशन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा साइड बार। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है हमारा साइड बार। सो आपको इस salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन में आपको साइड बार कहाँ दिखाई दे रहा? आप किसी भी टैब पे क्लिक कीजिए, लाइक मैंने कंपेन्स पे क्लिक किया, उस टैब पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट न्यू, रिसेंट आइटम, रिसाइकल बिन, ऐसे आपको जो सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड बार। ये आपका साइड बार है जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, राइट? अगर आपको लगा कि सर ये जो यूआई हम लोग जो देख रहे हैं, ये यूआई हमें छोटा पड़ रहा सर काम करने के लिए, राइट? आपको इस यूआई को एनलार्ज करना है, मतलब ये जो यूआई यूज हुआ है, इस यूआई को आप पूरा यहाँ तक की यूज करना अगर चाहते हो तो आपको ये साइड बार यहाँ क्या करना होगा, इसे बंद करना होगा, तभी जाके आप इसे यूज कर सकते हो पूरा फुल स्क्रीन, राइट? तो ये जो साइड बार है, आप किसी भी टैब पे क्लिक कीजिए, साइड बार आपको हर टैब में मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर भी आपको साइड बार मिलेगा, और हर टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यूआई कुछ अलग अलग दिखेगा, राइट? तो ये जो साइड बार है, इसे हम लोग अनेबल और डिसेबल कैसे करेंगे? हाउ टू अनेबल एंड डिसेबल द लेफ्ट हैंड साइड बार। ओके, सो इस साइड बार को अगर आपको अनेबल डिसेबल अगर करना है तो आप जाओगे सेटअप, नेविगेशंस याद रखिए, आपने जाना सेटअप, सेटअप में जाके आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे जिसमें कस्टमाइज, देखो यहाँ अलग अलग मेन्यूज आपको मिलेंगे। सेटअप बटन पे जब आप क्लिक करोगे, सबसे पहला मेनू एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड मेनू आपको मिलेगा बिल्ड, देन थर्ड मिलेगा डिप्लॉय, देन मिलेगा मॉनिटर एंड देन जॉब्स एंड लॉग्स। हर मेनू का कुछ ना कुछ मीनिंग है, यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले सारी चीजें, बट फिलहाल हमें गरज है बिल्ड मेनू की। बिल्ड मेनू के अंदर जो आपके पास कस्टमाइज ऑप्शंस है, इस कस्टमाइज को आप करोगे एक्सपांड। आप यहाँ बीच में किसी भी टैब पे यहाँ बीच में आप क्लिक नहीं करोगे, आप बाजू में जो एक्सपांडेबल बटन्स है, इस एक्सपांडेबल बटन्स को आप एक्सपांड करोगे क्लिक करके, राइट? यू जस्ट क्लिक ऑन द एक्सपांडेबल बटन beside the customize, okay, and then you are just select the user interface, okay? आपने देखिए, आपको नेविगेशंस फिर से बता रहा हूं मैं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जो साइड बार दिख रहा था उसे मुझे अनेबल और डिसेबल करना था, जिसके लिए मैं सेटअप में गया। सेटअप में जाके लेफ्ट हैंड साइड में आपको बिल्ड मेनू के अंदर कस्टमाइज को एक्सपांड करना है। कस्टमाइज को एक्सपांड करके आपको इसमें यूजर इंटरफेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, आप यूजर इंटरफेस पे क्लिक करोगे। यूजर इंटरफेस पे क्लिक करके यहाँ आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन यूजर इंटरफेस नाम से, दूसरा सेक्शन साइड बार, तीसरा कैलेंडर, ढेर सारे सेक्शन यहाँ अवेलेबल है। अब आपको इन सेक्शंस में से किसका काम है? साइड बार का, क्योंकि आप साइड बार को अनेबल और डिसेबल करना चाहते हो, आप उसे फैसिलिटी देना चाहते हो कि भाई मैं तेरे को अनेबल कर सकता हूँ, जब मेरी इच्छा है तब मैं तुझे डिसेबल भी कर सकूंगा, राइट? तो साइड बार जो एक सेक्शन है, उस साइड बार वाले सेक्शन में आपके पास एक चेक बॉक्स है जिसका नाम है अनेबल कोलैप्सिबल साइड बार। आपने इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाना, आपने इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगाना, एंड देन आफ्टर आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, सो आपका जो साइड बार रहेगा वो अब आपको अनेबल डिसेबल करते आएगा। जैसे कि मैंने कंपेन्स पे क्लिक किया तो देखिए मेरा साइड बार यहाँ डिसेबल है, ठीक है? मैं यहाँ पूरा फुल स्क्रीन यूज कर पा रहा हूँ, इस यूआई पे मुझे पूरा फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट? अगर मुझे साइड बार को ओपन करना है तो ये जो बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से साइड बार ओपन हो जाएगा। आपको जब साइड बार क्लोज करना है तो आप इसे डिसेबल करो, इस बटन पे क्लिक कर दो। तो ये बटन क्यों आया? क्योंकि आपने अनेबल कोलैप्सिबल साइड बार वाला जो चेक बॉक्स था, उस चेक बॉक्स पे आपने चेक मार्क लगाया, तब जाके ये साइड बार वाला जो बटन है ये आपका अनेबल हुआ, राइट? अगर वापस से किसी को ऐसा लगा कि सर ये जो साइड बार जिसे आपने अनेबल करा है, डिसेबल भी हो रहा है, अनेबल भी हो रहा है, ये जो बटन है ये हमें नहीं चाहिए सर, तो वापस आप जाओगे सेटअप,
वापस आपने वहीं पर जाना जहां से आपने इसको एक्सेस दिया, सेटअप में गए, कस्टमाइज को एक्सपांड करा, एक्सपांड करके आप यूजर इंटरफेस पे जाओगे, सबसे नीचे यूजर इंटरफेस पे जाके आपको सेक्शन मिलेगा साइड बार, अनेबल कोलैप्सिबल साइड बार वाला चेक मार्क आपने हटा देना, देन आफ्टर आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना, तो आपका जो साइड बार पहले आप जिसे अनेबल डिसेबल कर पा रहे थे, अब वो बटन आपका यहाँ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने उसे अब डिसेबल कर दिया टोटली। क्लियर? तो ये था आपका साइड बार जिसे आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो। कैसे करना, नेविगेशन नोट्स में भी दिया है, मैंने भी बताया, तो अगर रिकॉर्डिंग देख के अगर नहीं समझ रहा तो आपके पास नेविगेशन भी अवेलेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। So by using this feature, we can perform all the operations on the object record. We can insert, update, delete, undelete, and view the record inside the object. Okay? यहाँ जो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई एसक्यूएल से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, नहीं। सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ माउस क्लिकिंग के जरिए ही काम करना है। यहाँ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ाई जाती है। डेवलपमेंट मॉड्यूल जब स्टार्ट होता है तब जाके उसमें आपको एपेक्स प्रोग्रामिंग और विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है बेसिकली। ओके, सो रिकॉर्ड मैनेजमेंट कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर यूज केसेस दे के रखे हैं अलग अलग। इन यूज केसेस को हमें आज सॉल्व करना है। सबसे पहला यूज केस, कॉन्फ़िगर द रिसेंट रिकॉर्ड सेक्शन फॉर द अकाउंट ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट बिलो फील्ड इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर। आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाना है। आपको मैं पहले ही बता दूं, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द टेबल। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द टेबल। अगर मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं, अकाउंट टैब की बात कर रहा हूं, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट मतलब अकाउंट नाम से टेबल बना हुआ है सेल्सफोर्स के पास में, राइट? उस टेबल में हमें काम करना है। अब उस ऑब्जेक्ट पे हमें काम करना है, तो मुझे यहाँ यूज केस में दिया है कि आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाओगे और अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाके ये जितनी भी फील्ड दिखाई दे रही है इन फील्ड्स में आप वैल्यूज एंटर करोगे। ओके, तो हम लोग अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कैसे जाएंगे? तो ये हमारा अकाउंट टैब, आपने अकाउंट टैब पे क्लिक करना। ओके, अकाउंट्स नाम से आपका टैब है, ऑब्जेक्ट नेम आपका अकाउंट है, ये चीज हम लोग पहले ही देख ली। टैब नेम ऑलवेज प्लूरल फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट नेम ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्मेट, राइट? सो अकाउंट टैब पे क्लिक करना आपने, न्यू बटन पे आप क्लिक करोगे। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो यूआई दिखेगा, इस यूआई में आपको अलग अलग सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन। 3 कमांड बटन दिखाई दे रहे हैं, सेव, सेव एंड न्यू एंड कैंसल। ये पेज ब्लॉक का आपका नाम दिया हुआ है, सेक्शन हेडर है, टाइटल है, सब सारी चीजें बना के मिली हुई है आपको। तो ये आपको किसने दिया बना के? आपने तो क्रिएट नहीं करा। तो ये सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड टैब है जिसका नाम है अकाउंट। तो ये सारी चीजें सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट बना के आपको दिया है, आप इसे यूज करोगे, राइट? तो आपने अकाउंट टैब पे क्लिक करा, न्यू बटन पे क्लिक करके आप इस फाइल को आप देख पा रहे हैं, इस यूआई को आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आके आपको अकाउंट नेम वाला जो फील्ड है उसके बाजू में रेक्टेंगुलर बॉक्स में बाजू में रेड कलर का सिंबल दिखाई दे रहा, मतलब ये आपका मैंडेटरी फील्ड है। आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक के देखे होंगे, सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में R का सिंबल दिया हुआ रहता है। उससे आपको समझ में आता है कि ये आपका मैंडेटरी फील्ड है, ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड है जिसे आपको फिल करना जरूरी है। विदाउट इस फील्ड में डेटा डाले आप इसे सेव नहीं कर सकते हो। मैंने अगर सेव बटन पे क्लिक अगर करा भी तो मैं इसे सेव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका अकाउंट नेम वाला फील्ड मैंडेटरी फील्ड है, राइट? तो मुझे यूज केस में जो जो फील्ड में डेटा एंटर करने बोला है उन सारी फील्ड्स में हम लोग डेटा एंटर करेंगे। सबसे पहला फील्ड अकाउंट नेम, देन रेटिंग। सो अकाउंट नेम में हम लोग जो भी नाम एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रमेश कुमार, मैंने नाम एंटर करा रमेश कुमार, राइट? उसके बाद मुझे बोला गया था नेक्स्ट फील्ड है मेरी रेटिंग, देन इंडस्ट्री। सो ये रहा मेरा रेटिंग का फील्ड। इस फील्ड में जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो इट्स अ पिक लिस्ट। इसे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते आए होगे अब तक के, सेल्सफोर्स में आप इसे पिक लिस्ट बोलोगे। ओके, सेल्सफोर्स के पास डेटा टाइप भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना ही है। तो इस पिक लिस्ट में से आपके पास टोटल 3 अलग अलग वैल्यूज है, आप रेटिंग जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने रमेश कुमार को रेटिंग दे दिया वाम, मैंने रमेश कुमार को रेटिंग दे दिया वाम। आपने इसके पहले रेटिंग जब भी देखे होंगे, आप जब मूवीज देखने जाते हो तो मूवीज को जब रेटिंग देना होता है तो हाई, मीडियम, लो के फॉर्मेट में दिखाई देती है, बट सेल्सफोर्स की रेटिंग वार्म, कोल्ड और हॉट इस टाइप से ही आपको दिखेगी।
आपने रेटिंग दे दिया वाम। ओके, इतना होने के बाद में आपको नेक्स्ट फील्ड बोला है इंडस्ट्री, देन एनुअल रेवेन्यू। सो इंडस्ट्री में आप वैल्यूज एंटर करोगे। इंडस्ट्री में भी पिक लिस्ट यूज हुआ है। आपको किसी टाइप का कोई मैंडेटरी वहां बनाया नहीं है मैंने कि आपको इंडस्ट्री में यही वैल्यू चूज करना है, राइट? आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। मैंने चूज किया बैंकिंग, हमने चूज किया बैंकिंग। देन नेक्स्ट फील्ड है आपका एनुअल रेवेन्यू। एनुअल रेवेन्यू में आपको जितना भी डालना है डाल दीजिए, 2 लाख रुपीज डाल दिया मैंने। देन नेक्स्ट फील्ड है आपका फोन फैक्स टाइप। सो ये आपका फोन नंबर एंटर कर दीजिए। सो मैंने मेरा फोन नंबर एंटर कर दिया। फैक्स नंबर एंटर करना है, फैक्स नंबर एंटर कर दिया। द नेक्स्ट फील्ड कौन सी है अपनी? तो नेक्स्ट फील्ड अपना टाइप, ओनरशिप, कस्टमर प्रायोरिटी। तो टाइप, ये रहा मेरा टाइप वाला फील्ड। इसमें भी पिक लिस्ट है, कोई भी टाइप ले सकते हो। मैंने लिया फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट। उसके बाद ओनरशिप, ओनरशिप हमने लिए पब्लिक। ओनरशिप के बाद में मुझे नेक्स्ट फील्ड दिया गया था कि आपको कस्टमर प्रायोरिटी और एक्टिव स्टेटस में भी वैल्यू एंटर करना है। तो ये रहा आपका कस्टमर प्रायोरिटी वाला फील्ड, इसमें जाके आप वैल्यू एंटर करोगे। और ये रहा आपका एक्टिव स्टेटस, इसमें जाके आपने वैल्यू एंटर करा। यस, आपने सिर्फ वैल्यू चूज करना है। आपको किसी टाइप से कोई ऐसा बोला नहीं है कि आप यही वैल्यू चूज करोगे, वही वैल्यू चूज करोगे, राइट? आप फिलहाल सेशन अपना स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के हम लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। ओके, हमने वैल्यू चूज करके जितनी फील्ड मुझे दिया था उन सारी फील्ड में वैल्यूज एंटर कर दिया। मैंने सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा रमेश कुमार नाम से। और ये रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रमेश कुमार नाम से। और इस रिकॉर्ड में आपने जितनी चीजें एंटर करे थे वो सारी चीजें आप यहाँ डिटेल में देख पाओगे। आपने रेटिंग डाले थे वाम, फोन नंबर डाले थे, फैक्स नंबर एंटर किए थे, यू एंटर द टाइप, इंडस्ट्री, कस्टमर प्रायोरिटी, एक्टिव स्टेटस एंड ऑल। ओके, क्लियर? तो ये आपने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया? रिकॉर्ड मैनेजमेंट में से इंसर्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। इतना होने के बाद अगर किसी को लगा कि सर मेरा जो फोन नंबर है वो मुझे चेंज करना अगर है तो मैं कैसे करूंगा? आपके पास एडिट बटन है यहाँ पर। इस रिकॉर्ड को एडिट करने के दो तरीके, या तो आप एडिट बटन पे क्लिक करो एंड देन फोन नंबर को एडिट करो। तो वापस मैंने मेरा दूसरा एक फोन नंबर डाल दिया 8668233998। ये फोन नंबर डाल के मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, मैंने रिकॉर्ड को सेव कर दिया। वापस मेरा यहाँ अपडेटेड वाला फोन नंबर दिखाई दे रहा। बट अगर आपको इस एडिट बटन पे क्लिक करके इस रिकॉर्ड को अगर एडिट नहीं करना है तो आपके पास सेल्सफोर्स के साइड से आपको एक फीचर भी प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स, जिस फीचर का नाम होता है इनलाइन एडिटिंग फीचर। कौन सा फीचर? इनलाइन एडिटिंग फीचर। इनलाइन एडिटिंग फीचर के जरिए आप किसी भी फील्ड को डायरेक्टली उसके बाजू में देखिए ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनलाइन एडिटिंग फीचर। आप इस पे डबल क्लिक करके आपको अगर अकाउंट नंबर एंटर करना है तो करो, आपको अगर यहाँ टाइप में कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दिए। जैसे ही डबल क्लिक करें आप बाहर के बाहर वैल्यू एडिट कर पा रहे हो। देख रहे हो, मुझे एडिट बटन पे क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर कुछ वैल्यूज चेंज करना है तो मैं वैल्यू यहाँ बाहर के बाहर डायरेक्टली इनलाइन एडिटिंग फीचर का यूज करके मैं सारी वैल्यूज चेंज कर पा रहा हूँ। मुझे अगर फोन नंबर भी वापस चेंज करना है तो मैंने फिर से फोन नंबर अपडेट कर दिया, फिर से फैक्स नंबर अपडेट कर दिया मैंने। ओके, एंड देन आफ्टर हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। समझ में आया? तो आपको इस एडिट बटन पे अगर क्लिक नहीं करना है तो आप इनलाइन एडिटिंग फीचर का यूज करो, जिसमें हर फील्ड के बाजू में पेंसिल वाला ऑप्शन मिलेगा। डबल क्लिक करो, उस फील्ड को चेंज करो, अपडेट करो आपकी वैल्यूज, राइट? तो ये था आपका एडिट एंड अपडेट ऑपरेशंस। उसके बाद अगर आपने ये रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने इस रिकॉर्ड को डिलीट करा, आर यू श्योर? यस कर दो। आपने रमेश कुमार नाम से जो रिकॉर्ड क्रिएट करा था रिसेंट अकाउंट में, आपको अब एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि आपने क्रिएट करा हुआ रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिए। सो एक बार अगर आपने डिलीट कर दिया किसी रिकॉर्ड को तो वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के रिसाइकल बिन। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रिसाइकल बिन है, आप इस रिसाइकल बिन में जाओगे और रमेश कुमार नाम से जो रिकॉर्ड आपने डिलीट करा वो रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखाई देगा। इस रिकॉर्ड के सामने जो चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पे आप चेक मार्क लगाओगे एंड देन आपने अनडिलीट बटन पे क्लिक करना। आप अनडिलीट बटन पे क्लिक करोगे सो आप फिर से आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाइए तो वापस आपको रिसेंट अकाउंट्स में रमेश कुमार नाम से रिकॉर्ड दिखाई देगा जिसे आपने डिलीट किए थे, राइट? समझ में आया? तो इस तरीके से आपने डिलीट करा हुआ रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में जाने के बाद भी आप उसे वापस लेके आ सकते हो। बट आप सोचोगे कि सर रिसाइकल बिन में डेटा हमारा कितने दिन तक के रहेगा? तो 15 डेज तक के आपका वैलिड रहेगा, ठीक है? आफ्टर डिलीट द रिकॉर्ड आपको आपका जो भी रिकॉर्ड आपने रिसाइकल बिन में भेजा है विद इन 15 डेज आप यहाँ से निकाल लीजिए इस रिकॉर्ड को
ओके, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे। समझ में आया? अगेन मेरा एक दूसरा यूज केस है, ये असाइनमेंट है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इन असाइनमेंट के ऊपर में ही लास्ट में, जैसे कि सर ने बोले कि लास्ट में हम लोग एक एग्जाम लेंगे एमसीक्यूज बेस का, तो वही हम लोग इसके बेसिस पे भी लेंगे, राइट? सो मैं और एक यहाँ पर हम लोग एक टास्क परफॉर्म करते हैं। इस असाइनमेंट में मुझे बोला है लीड ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ जैसा अकाउंट ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ आपको क्या बोला है, लीड ऑब्जेक्ट। Configure the recent record section for the lead object to represent the below field in the required order. ओके, लीड ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑपरेशन आपको लीड ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करना है। अब मैं गया मेरे यूआरएल, मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इस ऑर्ग में मेरे पास में लीड ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा। सो बंदा कंफ्यूज हो गया, तो लीड ऑब्जेक्ट है नहीं सर, कैसे करूं? आपने तो लीड ऑब्जेक्ट पे ही असाइनमेंट दे के रखा है। कोई टेंशन नहीं, प्लस बटन पे क्लिक करो, कस्टमाइज माय टैब आपको सिखाया ऑलरेडी। कस्टमाइज माय टैब में जाओ, यहाँ से आपने लीड ऑब्जेक्ट को चूज करना, इसको ऐड करना, देन आपने सेव कर दिया, ये रहा आपका लीड ऑब्जेक्ट। आपने इसमें न्यू बटन पे क्लिक करना, न्यू बटन पे क्लिक करके इस लीड ऑब्जेक्ट में टोटल 3 फील्ड्स आर मैंडेटरी, लास्ट नेम, कंपनी एंड लीड स्टेटस आर मैंडेटरी फील्ड। ओके, सो आपके पास लीड ऑब्जेक्ट में जितनी भी फील्ड मैंने यहाँ लिख के दिया है, उन सभी फील्ड में आपको वैल्यू एंटर करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रेटिंग। सो मैं गया फर्स्ट नेम एंटर करने, मैंने यहाँ फर्स्ट नेम डाल दिया विनीत, लास्ट नेम डाल दिया कुमार। ओके, एंड देन रेटिंग मुझे एंटर करना है, तो ये रहा रेटिंग। रेटिंग हमने इसका कोड एंटर कर दिया। उसके बाद में मुझे और नेक्स्ट फील्ड कौन सी बोला है, इंडस्ट्री, एनुअल रेवेन्यू, कंपनी। सो इंडस्ट्री हम लोग चूज करेंगे, तो ये रहा मेरा इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लिया मैंने। एनुअल रेवेन्यू जो भी देना था दे दिया। उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड हमें बोला गया है कंपनी, स्टेटस, फोन, फैक्स, ईमेल। सो कंपनी, ये रहा हमारा कंपनी। कंपनी में फॉर एग्जांपल टीसीएस में ये बंदा, टीसीएस एंटर कर दिया। देन फोन नंबर एंटर करना है, फोन नंबर आप एंटर कर दीजिए, जो भी डमी नंबर है वो। फैक्स नंबर एंटर करना है, फैक्स नंबर आपने एंटर कर दिया। ईमेल आईडी अगर एंटर करने बोला है तो कीजिए vinitkumar@gmail.com, ये आपने मेल आईडी एंटर कर दिया। जितनी फील्ड्स में मुझे वैल्यू एंटर करना था, यहाँ जितनी फील्ड्स मुझे दिया गया था, उन सारी फील्ड में मैंने वैल्यू एंटर करना। वैल्यू एंटर होने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करो वापस। जैसे सेव करोगे आपको विनीत कुमार नाम से रिकॉर्ड विजिबल हो रहा। वापस आप इसके ऊपर में आपके रिकॉर्ड मैनेजमेंट के जितने भी ऑपरेशन मैंने इसके पहले बताया, आप एडिट करके देखिए विद द हेल्प ऑफ एडिट बटन, विद द हेल्प ऑफ इनलाइन एडिटिंग फीचर। आप रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हो। आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करके देखो, रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद जाएगा रिसाइकल बिन में, लेफ्ट हैंड साइड में रिसाइकल बिन आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से वापस रिस्टोर करो अनडिलीट बटन पे क्लिक करके, राइट? तो ये सारे ऑपरेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आपको परफॉर्म करना है। क्लियर है? सो ये सारे ऑपरेशंस और सारे असाइनमेंट नोट्स में ऑलरेडी यहाँ दिया है मैंने, आप लोग इसे परफॉर्म करो। क्लियर? यहाँ पर इनलाइन एडिटिंग फीचर आपने जो सीखे उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है? आफ्टर रिमूविंग द रिकॉर्ड, योर रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द रिसाइकल बिन, but deleted record will get reside inside the recycle bin for 15 days, only for 15 days के लिए वो वहां रिसाइड होंगे। ओके, विद इन 15 डेज आप वो रिकॉर्ड पहले ही वहां से फेच कर लीजिए, रिस्टोर कर लीजिए। ओके, यहाँ तक के सभी को समझा होगा आई होप। किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आफ्टर दिस सेशन आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड रहेगा, आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? बट ये असाइनमेंट आप लोगों को परफॉर्म करना है। मैंने दो बता दिया। ऋषिकेश सर, हाँ सर। Sir, we'll have only 10 minutes with us because at 12 noon we have another events on the same Zoom account. Okay. So Okay. we'll have to finish within the 10 minutes. Okay? Yes, yes. The rest of the parts we will continue in the next session by tomorrow. Right? Okay. Okay. Please complete within the 10 minutes. Yes. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनहांस लिस्ट व्यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनहांस लिस्ट व्यू। अब एनहांस लिस्ट व्यू मतलब होता क्या है बेसिकली, और इस एनहांस लिस्ट व्यू में हम लोगों को ढेर सारे असाइनमेंट आप लोगों को यहाँ सॉल्व करना है। ये पहला यूज केस जैसे कि आपको दिया है। ओके, मैं आपको बताना चालू कर रहा हूँ एनहांस लिस्ट व्यू के बारे में, अच्छे से ध्यान दें। आपने फॉर एग्जांपल अकाउंट टैब पे क्लिक करें। इस अकाउंट्स टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास में यहाँ पर व्यू करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शंस पे आप जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ अलग अलग फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल अकाउंट, माई अकाउंट, न्यू लास्ट वीक, न्यू दिस वीक, राइट? आपने ऑल अकाउंट्स पे क्लिक किया। ऑल अकाउंट्स पे क्लिक जैसे ही आपने किया, यहाँ पर आपको इस अकाउंट टैब में, इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ विजिबल होंगे।
जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। अब अभी तक के तो मेरे पास में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बना हुआ है ना, रमेश कुमार नाम से एक ही रिकॉर्ड हमने क्रिएट करे हैं। बट आप बोलोगे कि सर ये रिकॉर्ड कहाँ से आ गए, तो जब भी आप salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हो तो Salesforce के जो भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है वो पहले से आपको कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर दे के रखेगा सैंपल के लिए, राइट। इन्हें हम लोग यूज भी कर सकते हैं, बट ये Salesforce के स्टैंडर्ड रिकॉर्ड्स है जो Salesforce ने आपको बना के दिए। सो हमने क्या किए, ऑल अकाउंट्स पे जैसे ही क्लिक करें तो हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में जितने भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लगा कि सर मुझे यहाँ 10 रिकॉर्ड्स ही देखना है, इस लेआउट में मुझे सिर्फ 10 रिकॉर्ड देखना है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, डिस्प्ले 10 रिकॉर्ड्स पर पेज पे आपने क्लिक करना, आप यहाँ सिर्फ 10 रिकॉर्ड देख सकते हो। तो दिस इज द पैजिनेशन कंसेप्ट ऑल्सो, इसे आप पैजिनेशन कंसेप्ट भी बोल सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि सर मुझे 10 रिकॉर्ड देखना है तो 10 देखो, 25 देखना है 25 देखो, 50, 100 जितने देखना है आप उतने विजिबल करा सकते हो इस यूआई पे, राइट। अगर यहाँ मैंने 10 रिकॉर्ड देखा हुआ है तो मुझे यहाँ 10 ही देखेंगे, बाकी के रिमेनिंग 4 अगर देखना है तो क्या, तो आपके पास नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करो, रिमेनिंग 4 रिकॉर्ड्स आर विजिबल इनसाइड दिस सेकंड पेज। ओके, अगर आपको फर्स्ट पेज पे जंप करना है तो आपके पास यहाँ पेज नंबर डाल दो, आप 1 लिख दो, एंटर प्रेस करो, आप फर्स्ट पेज पे फिर से जंप कर जाओगे, राइट। ये आपका है पैजिनेशन कंसेप्ट, समझ में आया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सर 10 रिकॉर्ड नहीं 50 रिकॉर्ड देखना है तो आप 50 पे क्लिक करो, 50 रिकॉर्ड्स यू आर विजिबल। ओके, उसके बाद आपके पास और एक फैसिलिटी है, अगर आपकी इच्छा है कि सर ए नाम से जितने रिकॉर्ड अवेलेबल है मुझे वो देखना है, तो ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट यहाँ दिए हुए हैं, आपने एक कोई भी लेटर पे क्लिक कर दो, ए नाम से जितने भी रिकॉर्ड है आपको यहाँ दिखाई देंगे। बट मेरे पास में फिलहाल ए नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, विजिबल कोई भी नहीं होगा आपको। बी पे क्लिक किया, बी नाम से एक रिकॉर्ड है, सी पे क्लिक करो, आप वेरिएबल वाइज भी आपका डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये Salesforce के स्टैंडर्ड फिल्टर, ऑल पे क्लिक करोगे आपको सारे रिकॉर्ड फिर से विजिबल हो जाएंगे। अब मेरा यूज केस है कि इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में से जितने भी रिकॉर्ड है, टोटल नंबर ऑफ 14 रिकॉर्ड, इनमें से मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स बाहर निकालना है जिनका रेटिंग हॉट है। मुझे इन 14 रिकॉर्ड्स में से ऐसे रिकॉर्ड बाहर निकालना है जिनका रेटिंग हॉट है। तो हम लोग फिल्टर कैसे लगाएंगे, हम लोग एनहांस लिस्ट व्यू कंसेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे। एनहांस लिस्ट व्यू अप्लाई करने के लिए आपने वापस अकाउंट टैब पे क्लिक किया, यहाँ क्रिएट न्यू व्यू करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपने इस ऑप्शंस पे क्लिक किया, व्यू का आप नेम एंटर कीजिए, आपको कौन से रिकॉर्ड निकालना है, हॉट रेटिंग कस्टमर रिकॉर्ड, हॉट रेटिंग कस्टमर रिकॉर्ड जिसे आपको बाहर निकालना है। आपने व्यू को नाम दे देना, टैब बटन का क्लिक करके आपको ये नाम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ओके, देन आप यहाँ पर फिल्टर लगाओगे, जिस फील्ड पे आपको फिल्टर लगाना है, तो आपका फील्ड है रेटिंग नाम से, इस फील्ड पे आप फिल्टर लगाओगे। रेटिंग इक्वल्स नॉट इक्वल्स ढेर सारे ऑपरेशंस हैं, आप यही सारे ऑपरेशंस प्रोग्रामिंग में करते थे, राइट। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, बहुत कुछ यूज करते थे, यहाँ ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना। आपको फील्ड का नाम दिया है, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट की सारी फील्ड है, इनमें से जिस फील्ड पे क्राइटेरिया लगाना है वो फील्ड चूज करो। रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, लुकअप आइकॉन आपके सामने आया है, इस लुकअप आइकॉन पे ही आपने क्लिक करना एंड देन वैल्यू चूज करना हॉट, इंसर्ट सिलेक्टेड। आप बोलोगे कि सर ये आइकॉन अपने आप क्यों आया, क्योंकि इस रेटिंग फील्ड में अगर आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो पिक लिस्ट यूज हुआ है। पिक लिस्ट मतलब मोर देन 1 वैल्यूज, तो जिस फील्ड में पिक लिस्ट यूज हुआ है वहां लुकअप आइकॉन अपने आप आ जाएगा, राइट। हमने इसको फिल्टर आउट कर दिया, रेटिंग इक्वल्स टू हॉट। आपको कौन सा कॉलम देखना है, रेटिंग वाला कॉलम, आपने रेटिंग वाले कॉलम पे कंडीशन लगाया, आपको वो कॉलम देखना है, आपने उसको ऐड कर दिया। रिस्ट्रिक्ट विजिबिलिटी में आपको 3 ऑप्शंस है, इसमें से आप चूज करोगे विजिबल टू ऑल, ताकि सारे यूजर्स देख पाए। देन सेव बटन पे आपने क्लिक करना, जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, इस टोटल 14 रिकॉर्ड में से आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट में टोटल 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका रेटिंग हॉट है, आपको बाकायदा यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, ये 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका रेटिंग हॉट है, राइट। समझ में आया। तो इस तरीके से आप फिल्टर अप्लाई करोगे, इस कंसेप्ट को बोला जाता है एनहांस लिस्ट व्यू। हर टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्रिएट न्यू व्यू का ऑप्शन दिखने ही वाला है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप फिल्टर आउट कर सकते हो आपका डेटा। सो बाकी रिमेनिंग यूज केस आप लोगों के लिए देके रखा है, इन यूज केसेस को आप लोग सॉल्व करोगे।